Hello 8th standard students, welcome back to our channel Vidyarthi. We are discussing the lesson compound interest. Now coming to example 12. At what rate percent will a sum of rupees 3125 amounts to rupees 3645 in 2 years? So we have understood how to find out the amount, how to find out the CI, and how to find out the principal. Now how to find out the rate of interest. At what rate percent means rate of interest you have to find out. Will the sum means what? Principal is equal to rupees 3125 amounts to, that is A is equal to rupees 3645 in 2 years, that means N is equal to 2 years. What we have to find out? R is equal to how much? So put the formula of A. A is equal to P into 1 plus R upon 100 the whole raised to N. So amount is 3645 is equal to P 3125 into 1 plus R you don't know, R upon 100 the whole raised to N is 2. Now bring 3125 to the other side, 3645 upon 3125 is equal to 1 plus R upon 100 the whole raised to 2. Now cancel this, it will be 5 6 are 30, 1 remains, 5 2s are 10, 2 remains, 5 5s are 25, 5 7s are 35, 1 remains, 5 2s are 10, 4 remains, 5 9s are 45. Now you got 729 upon 625 is equal to 1 plus R upon 100 the whole raised to 2. See, you remember आप लोगों का जो भी स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, वो लेसन इधर बहुत हेल्प होने वाला है. हियर 1 प्लस आर अपॉन 100 द होल स्क्वायर. अभी ये नंबर्स को देखो, किसी का स्क्वायर है? यस. 729 किसका स्क्वायर है? 27 और 625 25 द होल स्क्वायर is equal to 1 plus R upon 100 the whole square. अभी दोनों साइड LHS RHS में स्क्वायर आया, सो स्क्वायर्स गेट कैंसल्ड. सो क्या बचा? सिर्फ बेस 27 upon 25 is equal to 1 plus R upon 100. समझ में आ रहा है? राइट साइड में टू द होल पावर 2 रहेगा, सो LHS में भी पावर 2 में कन्वर्ट करने का. अगर इधर पावर 3 है तो इधर भी पावर 3 में कन्वर्ट करो. नाउ 27 upon 25, bring that 1 this side, it becomes minus 1 is equal to R upon 100. So when you take the LCM, it becomes 25 is the LCM, so 27 minus 25 is equal to R upon 100. You got 2 upon 25 is equal to R upon 100. So R is equal to 2 into 100 upon 25. हाँ है ना? R is equal to cross 2 into 100 upon 25. 25 ones are 25 fours are 2 fours are 8%. R है ना, इसके लिए 8%. So answer it is 8% per annum.
आर यू क्लियर विद द सम? एग्जाम्पल समझ में आया होगा? सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पावर सेम करो, फिर आगे 1 को दूसरे तरफ लेने का -1, देन फाइंड आउट आर. दैट वाज एग्जाम्पल 12. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 of worksheet 3, the related sum. सेम टाइप के हैं. सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ वर्कशीट 3. सो वर्कशीट 3 में अलग अलग टाइप के सम्स है, इसके लिए उसके रिलेटेड एग्जाम्पल ऑफ सम्स हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको इजी पढ़ने के लिए. एट व्हाट रेट परसेंट मीन्स आर इज इक्वल टू हाउ मच. विल अ सम मीन्स पी is equal to rupees 640 be compounded to मतलब it is amount rupees 774.40. हमेशा याद रखो प्रिंसिपल से बड़ा है अमाउंट, CI will be less than प्रिंसिपल. ये याद रखने का कॉमन सेंस है, ठीक है. सो प्रिंसिपल से बड़ा है, इट इज कॉम्पाउंडेड टू अमाउंट, ऐसे बोले नहीं है, इट इज अंडरस्टूड. नाउ टाइम दैट इज n इज इक्वल टू 2 years. नाउ अमाउंट का फॉर्मूला डालो, p इंटू 1 + r/100 द होल रेज टू n. So amount is 774.40 is equal to P 640 into 1 + r/100 the whole raised to 2. Now bring 640 to the other side. 774.40 upon 640 is equal to 1 + r/100 the whole raised to 2. Now ये आप लोगों को डेसिमल है ना, डेसिमल निकालो पहले तो इजी पड़ेगा. सो 77440 डिनोमिनेटर में आएगा 640 into 100. When you multiply by 100 this becomes 77440. 2 डेसिमल निकल गया. 1 + r/100 the whole raised to 2. Now it will be 0 0 cancelled. So how much it will be? It is a 7744 upon 6420 है ना, 6400. 1 + r/100 the whole raised to 2. Now power 2 6400 किसका है? 64 is of 8 and 2 zeros. You make it 10. That means 80. Now check 7744 किसका स्क्वायर हो सकता है? ये 80 का 6400. सो 7744 88 का है. कैसे चेक करने का? देखो ये 6400 80 आया. So ending with the 4 means what? Either it should be 82 or 88. याद है ना स्क्वायर्स का? एंडिंग विद किसके नंबर्स में आप लोगों को 4 आएगा? 2 2s are 4, 8 8s are 64. So you got 88 minus upon 80 the whole square. So 1 + r/100 the whole square. Now square powers cancel हो गया, बचा 88 upon 80 is equal to 1 + r/100. So r/100 is equal to
88 upon 80 minus 1. LCM is 80, 88 minus 1, that is why 80 R upon 100. That means R is equal to 8 upon 80 is equal to R upon 100. So R is equal to 8 into 100 upon 80. So it is 0, 0 cancel, 8 ones are, 8 ones are, so it is 10%. So answer, R is equal to 10% per annum. Are you confident of this sum? Whenever there is decimal, remove the decimal and then proceed with the calculation. Okay. Now coming to question number 11. The same type of sum to find out the rate of interest. At what rate of interest? So R is equal to how much? Will a sum, that is P, is equal to rupees 64,000 will be compounded to 68,000, means A is equal to 68,921. Now N is equal to 3 years. So you have to see for cube. Okay. Put the formula. A is equal to P into 1 plus R upon 100 the whole raised to N. That is 68,921 is equal to 64,000 into 1 plus R upon 100 the whole raised to 3. 68,921 upon 64,000 is equal to 1 plus R upon 100 the whole raised to 3. Now you can think of 64 and 30. 64 किसका क्यूब है? क्यूब देखने का है. 64 किसका क्यूब है? 4 का. 4 4 सा 16, 16 4 सा 64. 4 and 0. So डिनोमिनेटर में आया 40 और न्यूमरेटर में एंडिंग विद 1. सो कौन सा नंबर का क्यूब में एंडिंग विद 1? 41 है ना. 64 के इमीडिएटली नेक्स्ट नंबर इज 41. ट्राई रफ वर्क करो. 41 into 41 into 41 3 times multiply and see. So it will come up to 68,921. So 41 the whole cube. Calculation part, rough work I am not doing, you have to do it. Is equal to 1 plus R upon 100 the whole raised to 3. So 3 get cancelled. It becomes 41 upon 40 is equal to 1 plus R upon 100. So R upon 100, keep it on the right side. 41 upon 40, this becomes minus 1. LCM is 40. So 41 minus 40 is equal to R upon 100. That means 1 upon 40 is equal to R upon 100. इसके बाद कैलकुलेशन आप लोगों को इजी पढ़ना चाहिए. ऑलरेडी छोटे क्लास में सब किए हैं ना. सो R is equal to 40. So 1 into 100 upon 40. Isn't it? 1 into 100 upon 40. 0 0 get cancelled. 2 2s are 4. 2 5s are 10. So you got 5 by 2. That means 2 2s are 4. 1 remains by 2. That means 2.5%. So answer R is equal to 2.5% per annum.
Are you clear with the sums? The three sums, one example, two sums we have done wherein we have found out the rate of interest. Hope you are confident with this type of sums. Bye. Thank you. All the best.